Now, in last class, we have completed static friction and kinetic friction. Okay. Now we have to do, today's class will be inclined plane. इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे आज. क्वेश्चन एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज we have a plane inclined with horizontal at theta degree. An example we are taking a plane inclined at theta degree from horizontal. So case 1, if it is not slipping, या if object is not slipping, object हमारे पास रखा हुआ है यहाँ पे एक मास m. ठीक. So by FBD of block M, the forces can be drawn as. पहला फोर्स नीचे की तरफ लगेगा जो हमेशा लगता है, इट इज mg. और ये इक्वल m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, एट mg इज आल्सो कांस्टेंट. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस से नॉर्मल लगता है, ये लगेगा n सरफेस के नॉर्मल. ठीक. अब इस को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंगल विल बी mg cos theta and this is mg sin theta. अब अगर इसका मोशन एनालाइज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट सिर्फ इस पाथ पे मूव कर सकता है, इस पाथ पे मूव नहीं कर सकता. अगर इस पाथ पे नॉर्मल पाथ पे मूव नहीं कर सकता है तो इट मींस n और mg cos थीटा इक्वल. सो by analyzing motion of block, mg cos theta is equal to n. इक्वेशन नंबर 1. अब अगर ये ऑब्जेक्ट स्लिप नहीं कर रहा है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से कैंसिल हो गए, एक फोर्स बच गया आपका mg sin थीटा. इस फोर्स को कौन बैलेंस कर सकता है? सिर्फ एक फोर्स जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है. सो वी कैन से दैट सिंस ऑब्जेक्ट इज not slipping, then object is not slipping, then we can say that friction force
FR will be equal to mg sin theta. Question number 2. Again, so the case 2, if object is slipping, अगर ऑब्जेक्ट स्लिप करता है तो भी स्लिप कहाँ करेगा? ये ग्रीन वाले पाथ पे तो स्लिप करेगा नहीं, जब भी स्लिप करेगा येलो वाले पाथ पे स्लिप करेगा। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट स्लिप करता है तो भी mg cos theta will be equal to n, normal reaction force, number 1, and mg sin theta will be more than fr. क्लियर? अगर आप फोर्सेस को बैलेंस करना सीख गए हैं, देन वी हैव अ न्यूमेरिकल फॉर यू। कोशिश करिए आप खुद से करने का, इसको आंसर बताने का। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ mass m is placed on an inclined plane at theta degree from horizontal. तो ये ऑब्जेक्ट मास m का प्लेन पे रखा हुआ है एट थीटा डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। अगेन डायग्राम ये है। The question is, what should be the minimum coefficient of limiting friction so that the object does not slip? ये क्वेश्चन कंप्लीट है। आंसर बताइए, 2 मिनट है आपके पास, ट्राई करिए। हुआ किसी का? अब में से कोई आंसर करेगा, मैं करूं सॉल्व? तो फॉर लिमिटिंग केस कि ऑब्जेक्ट जो है स्लिप ना करे, उसके लिए कंडीशन क्या चाहिए आपको? mg sin थीटा और fr इक्वल रहने चाहिए, तभी ऑब्जेक्ट स्लिप नहीं करेगा, नहीं तो स्लिप करेगा। एंड वी नो दैट n इज इक्वल टू कितना है? mg cos थीटा एंड fr इक्वल टू mg sin थीटा। ऑल्सो
we know that fr equal to mu n means mg sin theta is equal to mu, it is coefficient of friction, mg cos theta, mg cancel, mu is equal to tan theta. So this is the minimum coefficient of friction required from an inclined surface so that object do not slip from it. आगे चले। अब इसमें बहुत सारे केसेस और अकॉर्डिंगली बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते रहेंगे, और एक न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूँ। तो in given figure, coefficient of friction between object and inclined plane is 0.2. What will be the acceleration of the block? The complete the acceleration and velocity of the block. उल्टा स्पीड पूछी ज्यादा अच्छा रहेगा। सॉल्व करेंगे। पर हो गया, मैं ट्राई करूं या मतलब आप ट्राई करोगे या डायरेक्ट करूं सॉल्व में?
कर दीजिए सर। ये जैसे अगर आप ट्रायंगल बनाइए, ये 10 मीटर है ना, क्या ये लेंथ निकाल सकते हैं? sin 30 कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 1/2 इज इक्वल टू 10/L, L इज इक्वल टू 20 मीटर। क्लियर? also yeah. n is equal to mg cos थीटा। मास कितना है? 20। सिंप्लिसिटी के लिए g की वैल्यू 10 ले रहे हैं, एंड वी हैव cos 30। 200 cos 30 is √3/2, it is 100 √3 Newton, and mg sin theta is equal to 20 into 10 into sin 30, 200 into 1/2, it is 100 Newton. 100 √3 is 171.32. या √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। मल्टीप्लाई करिए 100 इसमें, 173। हाँ, दिस इज 173.2 न्यूटन है। ठीक, नाउ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन Fr is equal to mu n। Fr is equal to 0.2 into n कितना है? 173.2। It is equal to how much? 14.246। 346.2। 34.6 ना? हाँ 34.64 न्यूटन। Now you can say that जो mg sin थीटा टोटल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स उससे कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्या ऑब्जेक्ट स्लिप करेगा? ऑब्जेक्ट के स्लिप करने की कंडीशन क्या थी? mg sin थीटा इज मोर देन फ्रिक्शन फोर्स, यही था। We can see that since mg sin theta is more than fr, therefore object will slip, ठीक? And net force acting on the object is equal to 100 minus 34.64। ये कितना हुआ? is equal to 65.36 Newton। Okay, now therefore
acceleration of the object. A is equal to net force by Newton's law, second law, upon mass. A is equal to 65.36 upon 20. 3.268 meter per second square. Answer. And again, for velocity, we are using third equation of motion. V square is equal to U square plus 2AS. V square, V वैल्यू निकालना है, तो V square is equal to initial velocity 0, नहीं गिवन है तो आप मान लेंगे, 2 into what is A, 3.26, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है इसको, 20 मीटर. V square is equal to 2 into 3.26 into 20, 130.4. V is equal to under root 130.4. V is equal to 11.419 मीटर पर सेकेंड. इस स्पीड से नीचे आएगा. आगे चलें. नोट कर लिया आपने? जी कर लिया. ये लास्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड. अगर ये आपने कर लिया तो आपसे इंक्लाइन प्लेन का कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगा. ध्यान से देखिएगा इसको. We have a smooth surface, smooth plane surface, which is getting inclined at angle 30 degree at point A. Smooth है ये. अब एक ऑब्जेक्ट है, mass 10 kg, moving with speed 20 meter per second. This much area is frictionless. On an inclined plane, coefficient of friction mu is equal to 0.2. बताना है कि in given figure, object will rise up to what height?
क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट किस किस हाइट तक राइज करेगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा है, यहाँ जाके रुक रहा है, ठीक, तो ये हाइट क्या होगा बताना। और इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर सकते हैं। ऑल्सो फाइंड वेदर दिस ऑब्जेक्ट विल रिटर्न और नॉट। ये ऊपर जाके वापस आएगा कि नहीं आएगा, यही पता करना है। मैं सॉल्व करूं। हम्म। सपोज करिए यहाँ तो फ्रिक्शनलेस है, तो यहाँ मोशन में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, लेकिन जैसे ही ये इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ेगा, as the object starts moving on inclined plane, then we have n is equal to mg cos theta, n is equal to 10 into g का वैल्यू 10 cos 30 is root 3 by 2, 100 into root 3 by 2, it is 50 root 3 Newton. What is 50 root 3 approximately? Is 86.6 Newton. Okay. And mg sin theta is equal to 10 into 10 into sin 30. Sin 30 is 1 by 2. It is 50 Newton. अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है अपोज करता है मोशन को, तो फ्रिक्शन फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगा और mg sin theta भी नीचे की तरफ लगेगा। तो वी कैन से दैट फ्रिक्शन फोर्स Fr equal to mu n 0.2 into 86.6 न्यूटन। मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है ये। 17.36 17.36 is 17.32 Newton. So therefore we can say total force opposing the motion total force opposing motion is equal to mg sin theta plus Fr is equal to 50 plus 17.32.
67.32 Newton. Therefore, retardation is equal to 67.32 upon 10. Total force upon mass 6.732 meter per second square. Therefore, distance traveled v square is equal to u square plus 2as. फाइनल वेलोसिटी 0, मैक्सिमम हाइट पे जाकर के रुकेगा ऑब्जेक्ट. इस u का वैल्यू कितना है? 20 स्क्वायर. 20 की स्पीड से जा रहा है. माइनस 2, रिटार्डेशन है इसलिए माइनस साइन. 6.732 into s, and this distance is s. ये है s. कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आप निकाल लेंगे. s is equal to 20 square is 400 upon 2 into 6.732. It is equal to 29.70 meter. This is distance. Therefore, h upon s is equal to sine 30. That means 1 by 2 is equal to h upon 29.70. Therefore, h is equal to 29.70 upon 2. So it is 14.854 meter. This is your answer. The object will go up to a height of 14.85 meter. इतना ऊपर ही ऑब्जेक्ट जाएगा. दूसरा क्वेश्चन क्या था? कि जाके वहां पर रुकेगा या वापस आएगा. लास्ट केस विल बी फॉर स्लिपिंग. आप देखें, रोकने वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स, वापस लाने वाला फोर्स mg sin theta. You can say that clearly, since mg sin theta is much higher than friction force, therefore object will again slip back down. Since mg sin theta is higher than friction force, therefore object will again slip back down. ऑब्जेक्ट वापस नीचे की तरफ आएगा स्लिप करके. मेरे पास जो पढ़ाने के लिए था वो ओवर हो गया है. इसके बाद आपके पास टेस्ट है, प्रिपेयर्ड है वो. आपको शीट भी दिया था. कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए. किसी को नहीं पूछना है क्या?
देखा ही नहीं फिर। ठीक है, लेकिन टेस्ट दीजिएगा आप, ना मैं भेज रहा हूँ लिंक आपको।